Alright guys, I'm back. There were some issues. We had to go for an entire house restart. तो जो भी house के सारे lights थे बंद करने थे फिर चालू करने थे. क्रिएटिविटी तो है. Let's head straight to tuner shop now. Let's see if Chris Wayne can hook himself up with a job that he can just like work, make life, make contacts, make a living.
No, no, Basha, thank you so much. बालाज मैं बस इतना बोलूँगा तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे. You guys won't be able to guess. फ्रंट बम्पर व्हीकल हुड देख सुन फ्रंट बम्पर साइड स्कर्ट हुड और फ्रंट व्हील्स. व्हील्स नहीं कर रहा, व्हील्स बाद में, अभी ये 3 कर देता हूँ. चल अबे व्हील्स भी कर ले कोई दिक्कत अरे नहीं. व्हील्स नहीं लगाए, वो कल व्हील्स लगे. जी सर बताइए हाउ कैन वी हेल्प यू. I'm actually looking for Kane. Why are you looking for him? तो पीछे Why am I looking for him? That I will tell him, right? अरे I'm लैपटॉप a senior mechanic here. You can tell me also. What happened? Why Yeah, are you but looking for him? the person who I met put me in contact with Kane, so I'll just have this conversation with him. He called me also here. मेरे को वो एक वीक के बाद या 2-3 Called you here. Kane Yeah. called you here. Yeah. Do you know this is a private shop? You cannot enter without asking that. May I enter, sir? You have to ask that before entering the shop. Really? Yeah. Are you sure about that? Now go back and ask again. Who are you? I'm a senior mechanic here. See, I didn't ask what do you do. I asked who are you. I think मैं I am हिंदी में helmet पूछता guy. हूँ. If your English is weak, no worries. मैं हिंदी में पूछता हूँ. आपका नाम क्या है? हेलमेट वाला. हेलमेट वाला इनका नाम. देख लो ना क्या सीन है, इनका कुछ मैं देख करना है लेता यार, कस्टमर है. मैं देख लेता हूँ सर. मैं देख लेता हूँ. कोई दिक्कत नहीं. केन सर आप कंटिन्यू करिए. हाँ अरे लैपटॉप भाई बताओ. ये लो. और क्या भाई करना है? क्या दे रहे हो? ये लैपटॉप ये सब नहीं लेते हम. क्या दे रहे हो ये? क्या दे रहे हो ये सब नहीं लेते. मेरे को देना है बताइए. तुम कह रहा है क्या बात का? हाँ. Interview. मार रहे हैं. It'll take few minutes, like 4 minutes. फुल रुपए चाहिए क्या तुम्हें? Let me कौन just सी गाड़ी लाओ. गाड़ी का नाम बताओ. Hello. हाँ बताओ. Are you Mr. Kane? Yeah. हाँ, I'm Chris. Actually, I was talking to one of my friends जिसका नाम गुस्तावो है, and he told me that like I was looking for actually a place to work at and a place to figure out where I can like actually like that interests me. And my two considerations, or honestly, he told me that there are multiple mechanic shops around, but the tuner shop is probably the best mechanic shop in Los Santos. So I just thought I would come and talk to you and ask if there are any openings, if there's any vacancies where I can just find a job or something. Okay. इंजन सब गया हुआ. What's your full name? It's Chris Wayne. What do you do right now? Like any job or So something? as of now, I do not do any job. I've actually reached here from Brooklyn. The thing is that my dad used to work at a mechanic shop, so I have like just observed him. I've never really worked ever in a mechanic shop, so I really don't know how to do things. But the thing is that since I've been observing him since a while, it just started to interest me more and more. And so I was looking towards a mechanic shop only, but I wasn't sure which one to work at. And then in the morning, I think Gustavo got his car here for some customizations, and that time I just looked at this place, and I mean the vibe out here was really, really amazing. So I just thought I would apply here if there was vacancies. If there isn't, I understand it, but if there are, then like I would like look forward if there was opportunities. Rolls Royce है नहीं? Okay. See, Mr. Chris, there are hirings going on, but Okay. it's through the logistic department. Okay. Logistic department, I'll tell you, you have to sell materials to the tuner shop for a week, and whosoever a person sells the maximum materials to the tuner shop at the end of the week, will give him a slot in the tuner shop as a trainee, 2-3 employees. But scene is we are taking interviews right now. Those are not normal interviews. They are strict interviews which we'll take on a strict basis. So if you are up for that, you can give a strict interview
but the chances will be minimal for your selection. If one question is also, one answer is incorrect, we'll be straightforward rejecting and you'll get a 2 weeks cooldown, right? But if you are planning to go into logistics and get yourself hired, then you can go for it. Third option is you have to wait for a week for the standard interviews for just introduction and all, where we'll hire a mass interview session where we can discuss on things and we can hire you. So if you are up for strict interviews, you have experience, you can go for it right now. I can take your interview, but So the thing your is, call. unfortunately, I do not have experience. I don't mind a strict interview, but if it's going to be more about like about the cars and about vehicle and about repairing, I really won't have that information. Because if I'm joining, I would ideally want to join as a trainee, just so that I learn things Yeah. first before jumping into a job. So I mean, I wouldn't Obviously, mind like, giving a strict interview, but I don't want to just face the repercussions of being on a 2 week cooldown because I don't know much. To be honest, I don't know much about how to repair, how to service vehicles, how to customize them. I do not have much knowledge. So I think, I mean, just tell me if I do give a strict interview and I do not pass it, can I still go down the logistics route? go down the what? The logistics route, the place where I have to come and give materials. Yeah, you can. Yep. So I mean, I don't mind going for that strict interview, and if I do not pass that, then I'll work around getting materials so that shop. I have no issues with doing that at all. So you can just let me know what all you'll require, and I'll start figuring out a way to get that to you all. Okay. Then we'll go for the interview. Okay? Okay, that's fine. Give me 5 minutes. Okay? No worries, take your Just time. rest around. I'll Yeah. take 5 minutes. Yeah. ओके ये ले तो मेरे को कस्टमाइज भी करानी है रेंज रोवर मदद करिए मदद करिए खर्चा कितना आएगा मिनिमम मेरे अकाउंट में 40,000 है Just be confident, man. Okay. 40,000 है बस मेरे इसमें पार्ट्स नहीं गाइस हेल्प करोगे मेरा इंटरव्यू में? दिखनी चाहिए बस मुझे घंटा कुछ आता है. 40,000 ना I mean, मुझे आता है. मेरे कैरेक्टर को घंटा कुछ आता है. आजा रुक फिर आजा Axel, रेडियो है ना? रेडियो ले लो यार. चिनॉय किधर है? Yeah, Rocket is a senior. Shinoy is my senior out here. Vagujan हो रही क्या नहीं? It's a new story. It's something that's not happened in India before. कहाँ गया वो? इसमें डिलीवरी भी है उसे पे गूगल कहाँ खोलो. चला गया ब्रो? चिनॉय? हाँ क्या है क्या ये दिख भी नहीं रही मेरे को तो We have the Mitsubishi. है We have the RS. यहाँ पर अच्छी दिख रही है वो कितने बाद We में have the कलर Range पहले चूज कर Rover. दे Oh, the 6 STR livery. प्राइमरी मैट Sheesh, what car is this? Rocket to Do 3 2 3 हाँ तो क्या हुआ? Like it's RP, right? ये तो कॉमन है हर कोई लेके घूमता है वाइट मैट में तो मैट पे वो लगा लेंगे ना क्या बोलते हैं सेकेंडरी ये सुल्तान आरएस. सेकेंडरी कौन सी करूँ बता अंदर ये नहीं पता मेरे को. ये है मेरी. आपकी कौन सी है? पीछे वाली ना? मेरी हाँ. हाँ। ये सुल्तान वो आरएस तो नहीं है. RS है। अरे वो मेरी पूछ रहा है. This is normal है ना? This is normal Sultan, just liveried up. तो माँ बहन कर दी. आइए मिस्टर करसाई. Yes sir. ये किसकी खड़ी है गाड़ी? साला ये प्रखर मुझे नर्वस क्यों करा रहा है यार? 2 वीक का कूल डाउन. हाँ प्रखर भाई नर्वस क्यों करा रहे हो मुझे?
भाई जी हमारी रिपेयरिंग सर्विसेज देख रहे हो कितनी बढ़िया होती है, ऐसी रिपेयर करते करते सो जाते हैं हम। बैठी बैठी। Yes, thank you, sir. Yes, Tristan, I'm there at tuner shop. कौन? हाँ जाओ 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 बढ़िया बढ़िया। Yeah. So before starting the interview, just one question. Mm-hmm. Can you hear me, right? Yeah, Pip, I can hear you. So just one question: are you affiliated with any gang stuff or something illegal in the city? Not at all, not at all as of now. I mean, no, no, no. I'm just looking for a job to be well settled off in life. I'm not affiliated with anything like that. Okay. So yeah, give me a short introduction of yourself. कहाँ से हैं आप, कितना टाइम हुआ आपको सिटी में, what experience have you gained? All right. So, all right. My name is Chris Wayne. The thing is, I was I used to stay in Brooklyn with my family. Out there, my dad used to work at a mechanic shop, and he used to take me along. Like in a week, he would take me like once or twice a week, just to like make me feel around the job, because he always had a hope that I would work with him one day in the future. But then then some negative aspects of life took place, and I had to get away from Brooklyn. So the thing is, I actually caught my flight of Los Santos today itself. I landed here, and I realized that after chilling with Gustavo for a while, he showed me around. I went to Maldini's, bought a little food, and realized that if I actually want to find myself in a well-settled place in Los Santos, I would want to be with people who I can look up to, as well as work at a place with those people. And so Gustavo was talking to me about a lot of places like the Maldini's, like Uvu Cafe and stuff. But I mean, I can deliver food, I can make food for a living, I can do that, but it's not something I'm really passionate about because of whatever my dad has shown me around. Cars and bikes are something that I look at, and I just like it makes me feel more happier. So I always had a thing in my head that while I might not know much about how to repair them, how to customize them, how to service them, how to provide other functions that probably are available out here, I would want to learn more and more about them. So I just thought that with the right guidance, this should probably be the place where I could probably like have a stable job at. Okay. So like you said that you have landed today, and you've not experienced complete loss in DOS. So how would you handle people around? Because in a mechanic shop, I'll tell you honestly, shop is a place where people try to mess around on regular basis. You'll get good people who will be patient enough, but you'll get people who are they create a mess around. They create negative things for you, and you will be impatient sometimes. Like it happens with the employees. So how would you handle them? Because you are completely new in Los Santos. You don't know how people react with things. There are many gang stuff here happening on a daily basis. So the thing is that basically customer service is something that I have experienced a lot in life. Back in Brooklyn, I would work at a grocery store just for just like to earn a little amount of money on the side job. But the thing is, where you say that there are new people coming in, some people will be patient, some people will not be. I think that is a part and parcel of each and every job, irrespective of if it's a mechanic shop or not. So the way I like to deal with it is just give me 1 second. एक सैंडविच Yeah. तो मम्मी लाए कितना बना के रखना 2 और दो डब्बे में मुझे 5 मिनट हाँ 2 हाँ डब्बे में हाँ. Yeah, sorry about that. I just had to just think about something really quick. But yeah, so the thing is, the way I like to handle it is, the patient customers that come in are always the most delightful customers, because when they come in, you talk to them, they get their work done, they are okay with you taking your time and making sure that the work is high quality. But the thing is, when the impatient customers come, the way to make them comfortable is to understand what their requirements are first. The requirements, not talking about vehicular requirements, talking about personal requirements, because I get it. Some people come and they might just say that I'm in a hurry, I need to rush out, make it fast. Some people might come and might have a very bad day, and they are really, because of that they are angry and they come in. Some people just want to mess around and that's why they come in. So I like to I give myself a minute to talk to the customer to understand about his day, because honestly, if he's angry, I would probably offer him a
thing to eat or thing to drink just to refresh himself, just to make him feel more comfortable around me. Because yes, a person will come here in a bad mood once. He will have a good session with me. By session I mean me taking care of his vehicle, taking care of him as well. He will come back again in a good mood after that. I'm not saying that will happen to every customer. Obviously, some customers are short-tempered and they will just come get the work done and bounce. But there are people like that, and to deal with those people, it is just providing them the best quality of work. If the quality of my work that I provide to them is less, then they have ample of reason to come and snap at me because I've not done my work right. But after I've done my work right and taking care of them, I am quite sure that they'll come back and come back in a very good mood. Okay. So my next question will be, if you know, tuner shop is not just a mechanic shop; it's a car sale shop. The exotic cars which come in Los Santos are imported in tuner shop, and we sell them on a daily basis. Actually, we get S plus cars and most exotic cars in the city. Totally. People from Prince, big people come here. They buy Prince? cars. So as an employee, you should get an idea of what cars are there in your shop, and you should if they want recommendations. So if someone needs advice buying a new car, what do you tell them from the starting? Like convince them so that they buy the best car which you recommend. If someone is advised in buying a car, you always understand requirements. Now, the way I understand requirements is first, it's simple questions. Now, the reason people buy cars, some people just buy cars for pure speed. Some people buy cars for luxury. Some people buy cars for the way the cars can be customized. The preferences are sometimes having a 2-seaters, having 4-seaters, having a lot of wide trunk space that you can take around the city. The requirements are there are too many. So first you need to understand a customer's requirements as to what exactly is he looking for. Say if he's looking for a 2-door luxurious car that can also have good speed, good acceleration. I would move towards something like probably the Scallion or probably a Lamborghini, depending on his budget. Now that's where budget comes into play, but I would not ask my customers their budget at the first question, because that really makes it a more thing that okay, तुम्हारे पास कितना पैसा है? Okay, इतना पैसा है, उतना पैसे में ये मिलेगा, and then customers get ticked off. So when you start off with money, the customers think that अच्छा ये तो बस they want to just sell their most expensive cars and that's about it. They don't really want to fulfill my needs. So that the end, after understanding all the requirements of what cars they want, what kind of cars they want, I would then come to a budget point. I would tell them in your budget range, in your specification range, there are multiple cars that range around a high budget as well as a mid budget. Now I would ask them at that point what their budget was. If their budget is at a high budget, since I would be joining as a trainee, and at my trainee phase, once I join, I would first research as to what all cars are available, because I do not want to be stupid at that point. Be like, okay, sir, I've understood the requirements. Let me go back, check what I have, and get back to you. Because then the customer will think I'm not prepared. So I'm going to prepare myself as to what cars we have, and then tell him that at this range, he can probably go for these, and these vehicles, and get the best get the best product for the money they're investing. Let's go on ground, okay? Okay. Some mechanics things and all, so that I get an idea that you are comfortable with mechanisms as a car repair or something. Okay. So let's go for a question. What if a customer's engine overheats? Maybe some accidents or something. So how would you determine the origin? Bhenchod? Eh? It's overheating. The engine is overheating. How would you determine the origin of that? Like how do I determine what is the cause for the overheating, right? Yeah. So okay, I'll be honest, and I guess it's a strict interview, and I need every answer to be correct. But what the thing that I know is that whenever an engine is overheating, obviously first the most default thing is depending on how much it's overheating. Sometimes cars just come up wasted at that level of overheating where it's already causing engine smoke to come out. To find the cause, we generally look at coolants. And the thing is, like back then when I used to work with my dad, we did not have end cars. So the cars that generally came in with engine overheating was basically drying off of their coolants that caused the engines to not really function that well and overheat. So that's all I know about it. And again, obviously, if you have the incorrect oil put in the engine oil is not appropriate, or it's you've been changing the oil too much, that can also lead to engine dysfunctionality. So I would have to check the oil, check the coolant. If that seems in place, then I would have to dig deeper into the car.
But these would be the first two things I would check. Okay. Tell me 6 basic parts of a car. 6 basic parts of a car. Like you mean by the normal parts or the more? Normal. No, that just normal parts, basic. Okay, so I mean, cars they have the accelerator, they have the brake, they have brake pads at the brake, they have obviously a steering wheel, the engine, a nozzle where you can fill petrol. Parts of a car, they have doors. The doors have windows which can be tinted, non-tinted depending on the type. They also have a roll cage that makes the car slightly heavier. Then depending on what other customizations the customer wants, it also has obviously glove box and stuff like that for storage. It has place in the back, which is the trunk. There are multiple parts like that in the car. I mean, I think these are the parts you're kind of referring to in a car. Okay. I'll give you a situation, okay? All right. A person is driving a car, at a speed of 120 kilometer per hour. He hits up at the same speed. He hits a sorry So, what? Your voice cut. Hello, am I audible? Yeah, now? you're audible now. I'm saying if a car hits a pole at a speed of 120 kilometer per hour Okay. from the front side, so what do you think with the percentage, okay? With the percentage, what do you think, what all parts will be damaged from the front side with the percentage, remember? Unfortunately, I would not be able to get this answer because I have not faced something like this in my life. And if according to me, I'll just talk of my point of view as to what I think it would be because I've not experienced this in my life. If a car engine has been hit heavily at 120 miles per hour onto a pole, if that pole is a very sturdy pole, it can cause heavy damage to the engine. So it also depends on what kind of a pole is it. Because some cars at 120 speed can really break off a pole and still continue to drive, depending on how the armor is placed in the car. So it is going to cause a lot of engine damage because it's hit head on straight to the engine. It's going to cause a lot of bumper damage. The body and the bumper part is going to be damaged slightly because of that. So there would be a little body kit repairing that would be required. So in percentages, I would not be able to answer because I am unaware, to be very honest. But this is the type of repair that would come in where I would have to look deeply into the engine first as well as the body kit. And the thing is that if at 120 he has hit a pole, I would figure out the reason, whether it was just reckless driving, whether it was brakes being an issue, whether it was the steering being an issue, and then go ahead and dig deeper. If it was the brakes, then the brake pad. If it was the steering, I would have to take out the steering and check if the oils inside the steering wheel are smooth enough for it to cause turnings. If it was reckless driving, then I would just tell that person to drive better. But percentages wise, I do not know. Okay, no problem. Tell me one thing. Bas kar bhai. You know something called NOS? Yes, nitrous oxide. Yeah. Yeah. So there are NOS refills in the tuner shop where we get cans and the only job is to fill it, and mechanics have to do, trainee 2 and above are allowed to do the NOS refill. They'll bring cans. So are you aware, some chemical things are also happening in the tuner shop? So you have any allergic symptoms or any health issues? No, sir, I do not have any allergic symptoms, nor any health issues. And yes, I am aware about NOS because there used to be NOS cylinders placed in the mechanic shop at Brooklyn. But I mean, I was not working with it, nor was I actually going near it too much. But I do not have any allergic issues to it. Okay. Bas bhai Prakar! Then it's fine. Just tell me one reason, last question, one reason why shouldn't I hire you? Why shouldn't you hire me? Yep. Why shouldn't you or why should you hire? Why shouldn't I hire Okay, you? why shouldn't you One hire me? reason Okay. about it. Your weakness. Okay, so honestly, my weakness is, to be very honest, attachment. The thing is, the people I roam with, the friends I make, the people I am with, I have faced this in the past, and I like it that if I'm going to work for someone, I like to be really transparent with them because I feel that not being transparent really makes me go very, very downhill. So when I have a group of people with me and who I trust a lot, who give me a lot of life advice when I require, sometimes I over consider the life advice, and that is my weakness. The reason I say that is I was working at a grocery store, like I mentioned. I got a job opportunity to work at another store close by where they would pay me a high amount of money and all of that.
So at that point, I had a couple of friends out there who were just like, and at the grocery store I was working, I had really good relations with my boss. He would like. He would really respect me as an employee. There would be no issues from my end. There would be no issues from his end. So it would be nice that way, that working out there. But my friends would always try to tell me like, bro, there's a lot of money there. Why aren't you just switching this switch? That's a good place, such a good grocery store. Why not just switch there? You'll make more money. They tried to convince me very heavily to move towards that grocery store. But during that phase only I decided to head towards Los Santos. I didn't make a decision. But I feel that if I had made a decision of switching just because I would get a little more money or just because my friends convinced me to, then I think that my relation with my current boss would have just got spoiled, and he would be like, why would I hire this guy and stuff like that. So I do get attached to people and hear them quite carefully when they give me advice. But I am honestly working on that. Because even like Gustavo gave me advice about working at multiple places, and he tried to tell me go here, go there. But then when he showed me the tuner shop, that's when I was like, okay, I want to work here. It wasn't just because he told me I came here. It was once he showed me the place, showed me the atmosphere here, it built up my. So I think of it more logically now, where I'm like, okay, you're giving me advice. Well, I'll hear your advice now, but I will not directly follow your advice. I will take the decision on my own. So yes, attachment, I consider that a weakness. माफी करो प्रखर. Okay, Mr. Chris, I'll just give you some instructions after you get hired, if you get hired, okay? Okay, sir. So there are things in tuner shop which we have experienced earlier. They were threatened, you know, it's a big place, it's a big, you know, known place in the city, and we get threats and all. So the gun which I was carrying is not an illegal gun. It's for my security given from the senator of Los Santos. Okay, sir. So there are things where you know, people will come, they'll threaten you for repairing their own cars for free and all. So you can contact the higher position people like me or senior mechanics. Will ban that guy from the tuner shop. Okay. Understood. Next thing is, if you get hired in the tuner shop, you'll be coming as a trainee and you'll be getting a good amount of attention from the senior employees. Definitely, train sir. you from the basic stuff. They'll give you everything. I'll appoint one senior mechanic if you get selected. Definitely, sir. Other than that, you are comfortable with a contract system, right? We'll give you a contract where you have to sign, and then Definitely, you'll sir. be hired. Of course, I'm fine with that. All right, so it was nice session with you, Mr. Chris. It was great talking to you as well, sir. Hopefully we'll meet you soon, okay? Definitely, sir. Definitely. Yeah. Give me a number, no? Yes, sir. 1 second. There you go. 2264. If you don't mind, can I get yours as well? Yeah, I'll message you. Give me a number. Perfect. My number is 415 531 2264. Okay. So if you get hired, you'll be messaged or you'll be mailed in 24 to 48 hours. Okay, if sir. you don't get your response in 48 hours, that means you have not cleared the round. Understood, but that sir. doesn't mean you have given any wrong question. It's just I told you about the slots and all. Definitely, sir. I That's the totally thing. understand that. If you get your response, congratulations. If you have not, just don't get you can apply in the logistics department as I well. definitely will. I mean, if I don't get it via this route, I really want to work here, so I will figure out that route as well. किन सर ये बंदा मेरे को सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों. देख लेना. अरे तुम काम करो, वो मैं देखूंगा कौन सी है. हाँ, okay. Alright, I just messaged you. Yes, I got right? your message. Yes. तुम्हारे जान के दुश्मन लग रहे हैं सिटी में. पता नहीं यार. पहले दिन ही. क्या बोलूं? बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना. कौन है ये? शिनोय. डर तो आपसे लगता है सर. अभी तो खाना खा के आया हूँ. हाँ. ऐसे क्यों डर लगेगा भाई? No, खाना खा के आया हो? अरे ओ नहीं प्लीज. नहीं. Cancer no please. No. यार खाना खा के आने वाले लोग बहुत पसंद है. No. No, Cancer, please, no. ये मेरे को एक चीज बोल दिया, मेरे को बहुत पसंद है.
क्या ऐसे खाना खा के आया हो? अरे वो गन अंदर। क्या No, क्या Kane, बोले Kane सर sir, no, कह Kane रहा sir, है no, कह Kane रहा sir, है no. खाना खा के आया हूँ मैं। Kane sir, not me, Kane sir, please, not me. नहीं Kane sir, no, Kane sir, please, please. शिनॉय बराबर। समझा? ये शिनॉय को समझ समझा, गया मैं केन तो। सर को समझा, मुझे पता है, बट हाँ केन सर यार वो प्लीज। यार वो कैसे करते थे, वो ऐसे हाथ ऐसे दो ऐसे करने वाला, वो क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल गया। क्या हाथ दो? छी भाई। छी क्रिस केन, वेन हियर वी छी। गो। शिनॉय वो तेरे पहले से हुआ दिन वैसे यार, आते शेने ही शिनॉय, you need छी। some medicine I think. मेरे से नहीं हुआ तुमसे। हेलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं चलो। मेरे को मत लेके जाइए साथ में, रुक जा। यस यस यस। मैं रुक जा, कहाँ भगा जा रहा है? हो गया इंटरव्यू तुम्हारा? इंटरव्यू तो हो गया, थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, लेट्स सी, डिपेंड्स ऑन व्हाट केन हैज इन माइंड। देखो भाई जी, तुम्हें सिलेक्ट होना है, हाँ हाँ, एक काम करो, सुमड़ी में मेरे को की $15,000 एडवाइस ली तो कैश डूब दे गए दो। तुम। $15,000 कैश दे दो सुमड़ी में, मैं तुम्हारे को भी एक्सेप्ट करा देता हूँ। अगर ब्राइबरी से ज़िंदगी में आगे पहुंचना होता ना, आई वुडंट बी अप्लाइंग फॉर अ जॉब, आई वांट टू लर्न थिंग्स। नो बॉल सीख सर। हिंदी में क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, मैं सुना नहीं, वापस नहीं से नहीं, वापस से। ये सीन है कि अगर देखो बोलता तो सोचता कि हाँ समझ नहीं आया, इसको समझ आता है। मैंने सुना नहीं, एक बार फिर मुझे बड़ा पहचानता है। आई मीन जैसे तुम बज रहे हो, सोच रहा था कि यार इट माइट बी लाइक, बेटा पापा बोलो। हैं व्हाट नॉइस सबको नहीं बुलाना है। व्हाट, ना मैन बेटा है क्या तुम्हारा तुम्हारा? बहुत मुश्किल से मिला। यार मेरे पास रिसिप्ट हो गई है, मेरे पास 350 रिसिप्ट हो गई है ट्रेनर की, बता क्या करूँ। जाके कैश आउट। यार मन नहीं कर रहा अभी, नहीं सर 500 करके जाऊंगा। पहले एक उसको रिपेयर कर दो सर प्लीज। 350 दे मेरे को। सर जैसे कि आपकी गाड़ी की हालत है सर, उस हिसाब से लग रहा है आपकी गाड़ी की सर $50,000 लगेंगे सर इसके पार्ट्स मंगाने में। लॉस एंटोस में मंगाएगा सर, दुबई से आएगा पार्ट्स, $50,000 लगेंगे सर, टैक्स वैक्स मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। 50,000 हाँ, तो सर। आज तक जिंदगी में टोटल कमाया नहीं सर। वैसे आर यू बोथ लाइक सीनियर तो मैकेनिक्स? सर अभी आपने गाड़ी इतनी महंगी ली है तो सर अब लगेगा, पार्ट क्या लगेगा। तुम दोनों सीनियर मैकेनिक हो? तो ऐसा पाल पाल के ऐसा नो आई एम नॉट। सर Like, अब तो सर तुम लोग को लाइक $50,000 टेंशन नहीं लगेगा। होगा इफ आई जस्ट लाइक हैंग अराउंड एंड वॉच यू गाइस वर्क, नहीं सर, राइट? मैं लाइक मैं अगर सर जस्ट यहाँ पे फॉर काम करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अरे वो ये तो फिर में रिपेयर हो जाएगा, सोच लो। मेरी दोस्ती ज्यादा महंगी पड़ती है नहीं सर, कभी कभार रिपेयर, कभी कभार गाड़ी खरीदने के लिए थोड़ा उधार, इतना ही अरे, मेरा बिल्कुल दोस्ती का सर। खर्चा है। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, दोस्ती मैं- का नहीं, सर, खर्चा? सर बात ऐसी है, हाँ सर, इसके दोस्ती पार्ट्स का मंगाने पड़ेंगे सर दुबई से, जो कि सर $50,000 लगेंगे। आप एक काम करो, चलो मैं आपके लिए 25,000 में कर देता हूँ, 25,000 लाओ मेरे को कैश। 25,000 भी नहीं है सर, ना मैं बोलता तो हूँ। फिर तो सर आप अपनी गाड़ी लो और सर चले हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिससे पहले ये $28,000 लात घुसे लगे आपको, उससे पहले आप चले जाइए। 28,000 is more than 25. 25 is 25. You still have 3,000. या अरे पेट्रोल पे भरने को चाहिए ना सर। सर अब आप पैरा किधर से निकले ला हो तो रहे हो सर अब थोड़ा? ऐसी बात है सर, किधर से पार्ट्स ला रहे हो? $75,000 लगेंगे थोड़ा रिसिप्ट दिखाओ सर, दुबई से। वो दुबई से 350 receipt रिसिप्ट देखनी है है ना, आपको, उसमें से 100 बिल्कुल, 100 दे दो। 100 दे दूं सर आपको। सर आप रुको, exchange नहीं शेनॉय कर कौन पाओगे, है क्या आप? फायदा? शेनॉय हो? यस सर, मैं शर्मा, बताइए। मैं ही मिला आपको लगाने को? हाँ मैं ही मिला। क्यों नाम लेता है यार, क्यों नाम लेता है यार? फंस गया देखा। अबे यार फंस गए शेनॉय, अबे फंस लोड गए। तेरा गाड़ी हो गया। पैरालीगल को दबोच लेता भाई। बोल बोल बोल। पूरा निकाल के सब कुछ कर देता होगा ना, तब भी इतना ऑर्गेजम नहीं आता होगा जितना सिर्फ सर को। अरे शेनॉय, वो थोड़ा सोनम को नका। क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा फोन मेरे अंदर घुसा क्यों रहे हो? सोनम को ना होगा, चलो चलो तुम्हारी जल्दी फैमिली सोनम को तो आने बहुत दूर हो। आने दो, सोनम को अच्छा भी ये आने दो, मेरे लिए उसकी एकदम खैर। चिपक के खड़े हो। बोलेगा ऐसा उसका पागल हो रिपेयर करने को। मैं पागल नहीं हूँ। 4-5 फीट दूर हूँ। 5 मेरे बिल्कुल, को, 15 बराबर। तेरे को। ओके तुम्हें बराबर, मास्क वास्क चलेगा। क्यों पहन के घूम रहे हो? वो थोड़ा कुछ सिचुएशन हो गया। भाई जी आपका नाम क्या था? क्रिस वेन ना? आप हाँ। ब्रूस वेन के भाई हो क्या? नहीं। वैसे सुना, एक सवाल आप था। ब्रूस वेन को जानते हो? अच्छा ठीक है, अगर तुमको अगर लेकिन अगर अगर तुम यहाँ पे काम कर रहे हो और मैं बस लाइक घूम फिर के थोड़ा ऑब्जर्व करूँ, क्या तुम्हें लाइक कुछ प्रॉब्लम होगा उससे? ताकि आई जस्ट लाइक वांट टू लर्न थिंग्स अराउंड हियर, यू नो, सो हाँ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना, ओके। आई जस्ट वांट टेक परमिशन, वरना ऐसे ही आके काम देखूंगा, लोग समझेंगे भाई ये क्या है, मुझे ऐसा क्यों नहीं देख रहा है? नहीं नहीं नहीं, तुम देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, किसी ने मना नहीं किया। पैसे वैसे नहीं लगेंगे ना?
नहीं कोई पैसे वैसे नहीं। अरे क्रिश मैं तो मजे लेता रहता हूँ। क्रिश हाँ हाँ वो तो है पीछे क्रिश वो नहीं वाला है, क्रिस है, क्रिस। उसको Chris ही बोल रहा हूँ। टेंशन मत लो, you might have some difficulty in pronouncing my name, no worries man. क्रिश क्रिश Yes हाँ तो क्रिस हाँ, हाँ Chris, वो पीछे yes. देखो जरा हाँ पीछे हाँ, देखो जरा हाँ देख रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना लोगो स्टिकर हाँ बढ़िया है ना हाँ बढ़िया always one step ahead yo. चलो हम जाते उयू पे ठीक है खाना लेना हो तो आ जाना उधर ठीक है लोगों को मेरे पावर पास नहीं बहुत खाना गंदा तो feel है होता मेरे मैं पास। तुम्हें बताता हूँ। हाँ, आओ धनंजय direct आओ, ऐसा मैं बोलो। आज एक वो बार नंबर दे दो देखो बात ऐसी है, वो my number. तो बात है ना भगवान से जोड़ी I mean, ये लो। वैसे तुम्हारा नाम है क्या? वो भी नहीं जानता हूँ। मेरा नाम है वॉरियर वॉरियर लाइक वो तेरा नाम तुम्हारा लाइक नाम है वॉरियर कि लाइक निकनेम है कि कोई प्यार से बुलाते हैं लोग कि एक्चुअल नेम है? पूरा नाम है नाम है वॉरियर यार क्रिस मतलब तुम्हें एक बात बताता ओके हूँ, एक देखो, सेकंड कभी नो भी कुछ भी ऑफेंस करो। बट एक सवाल पूछो। किससे? मेरे से? वॉरियर नो ऑफेंस, एक सवाल पूछो मेरे से, वॉरियर। हाँ जब तू पैदा हुआ माँ बाप ने बोला अरे वॉरियर निकला। है हाँ नाम पहली बार, बहुत यूनिक नेम है यार, कभी सुना नहीं है वॉरियर नाम का। ये नहीं और एक जन का है एक जमाइकन सिंगर है उसका नाम भी वॉरियर किंग है बढ़िया क्या ये एक सो आर यू अ जमैकन सिंगर? जो 2 पार्ट तूने लगाए नो आर यू अ सिंगर? बड़ा हाँ मतलब थोड़ा बहुत गा लेता हूँ तुम गाते हो? हाँ थोड़ा बहुत बाथरूम सिंगर यू कैन से मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गलती से भी मैं तेरे बाथरूम में ना हूँ? क्या यार एक काम करोगे क्रिस्वेन, बोलो आओ जरा तुम्हारे को टेस्ट करा जाए। आओ मेरा टेस्ट मत करो यार, मैं अगर हायर होऊंगा तो ट्रेनिंग से हायर होऊंगा यार, मुझे सिखाओ कुछ। बैठो गाड़ी में बैठो, आओ ड्राइविंग सीट पे बैठो, ड्राइविंग सीट पे किधर बैठ रहे हो? हाँ तो देखो बात ऐसी है, घर जैसी है। अभी ये लो चाबी, अभी एक काम करो, हम मार्क लगा रहे, जरा चला के दिखाओ हमारे को। चाबी तो दे दो। चाबी नहीं मिला। चलो अबे हमको वो ड्रॉप करो फिर तुम लोग निकलो। चाबी नहीं दे पा रहा हूँ। मिली चाबी? नहीं। अब मिली? हाँ अब मिली, अब पेपर कॉलेट। चलो मार्क लगा रहा हूँ, जरा पहले एक बार यहाँ ले लो। अरे ड्रॉप करेंगे और फिर वापस आएंगे। अरे गुस्तावो बैठो गुस्तावो बैठो। अरे आओ गुस्तावो, काम करा रहा हूँ। गुस्तावो मेरे भाई आओ बैठो ना। अबे क्या गुस्तावो, करोगे काम? गुस्तावो तेरा नंबर नहीं है आज तक मेरे पास, नंबर दे दे अपना हरामजादे कुत्ते। 4394 तुम लोग को मालूम है ये क्रिस है क्या है आगे? यप बड़ा गुस्तावो, हाउ इज इट गोइंग? इनको टेस्ट करने जा रहे हैं, बैठोगे? इसके पास तेरा नंबर है, बढ़ो तुम लोग के पास नहीं है। पता है अबे भाई गायब हो जाता है नंबर, तेरे को पता है ना? ABRAHM जब तुम एक बंदे को ज्यादा बारी कॉल नहीं करते हो उनके नंबर गायब हो जाते हैं। एक गाड़ी चलाओ, क्या कर रहे हो क्रिस्टोफर? तुम पहले गुस्तावो को बोल रहे थे कि तो हॉप इन एंड ही सेड ही वर्क्स, सो आई थॉट वी आर वेटिंग फॉर हिम। हां चलो आओ तुम्हारी ड्राइविंग देखी जाए। अरे हाँ पहले वो लो, वो भी छोड़ो मेरे को पहले। क्रिस्वेन और मित्सुबिशी का क्या वो है पता हो तो मैंने चला था। अबे चलाओ कैसी बातें कर रहे हो यार? I'll drive. I love cars, man. No, I love cars, man. I'll always drive. You love cars, na? I'll just drop this guy to Uvu because पता नहीं he wants to work a lot, so yeah. Yeah, he's working at Uvu. Do you ever believe that? Like Warrior Leather, like you don't know him. I totally agree that, but you know, I just by went his to name. I just went to I mean, Uvu like by his and name. I just went to Uvu and petted a pussy. Yeah. You? I petted a pussy. What? Repeat it again. I want to hear it again. I went to Uvu. I ordered some food and then I petted a pussy. You pet a pussy? I petted a pussy. So Yeah, bad, the bro. pussy was sleeping. I petted it. This sounds so bad. You know what? I made a girl wait.
Yeah. Yeah, I carried him and throw her in the water. She got wet. What the fuck? You both are going crazy right now. No, man, we're just talking general things, man. Looks like we are matching our vibe, bro. तेरे से नहीं हो रहा है तो तू अलग बात है. तू जा काम कर, चल वो पे काम कर, चल. यार पैसे की जरूरत है यार, इसलिए जाना हाँ पड़ चल रहा हाँ, चल तो चल करो चल काम. चल. Alright, see you around चल. over है. here. हाँ जाओ टिक्किया बना ओमू राइस बना, चल. Yeah, so Nice car, man. no, तुम्हारी गाड़ी है? oh yeah, it's my personal car. I own this beast. Beast तो है. That I agree totally. Yeah. He's a beast. है जी? Yes. Do you know Bruce Wayne, by the way? No, who's Bruce Wayne? Bruce Wayne is one of the richest person in Los Santos. Wait, what? Yeah. कौन है Bruce Wayne? You are Chris Wayne. I guess you should meet him one day. The richest meets the poorest. Maybe he could give some donation. Nah, man. The thing is that देखो, if somebody ever gives you a donation, at least मेरे लिए ऐसा है कि it becomes a favor. And favors बहुत costly हो जाते हैं कभी-कभी life में. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Okay. बिल्कुल सीधा वहाँ पे एक डोर होगा, उसके पास ले लो जरा, उधर से एक सामान उठाना है. वो गाड़ी में कैच करा देता, मैं कैच कर लूंगा खुद ही. ये डोर. जेसिका टेलर कौन है, जरा नाम जानना चाहिए. हाँ थोड़ा सा आगे लो. हाँ बस हो गया चलो. एक काम करना है, जरा मैं एक मार्क लगा रहा हूँ, जरा एक बारी वहाँ लेना है. तुम्हारा टेस्ट चल रहा है? Sure. I'm fine with it, man. I'm fine with it. Yeah. You can test Do you hear your dog sound? Yeah. Yeah, there's a dog in my car, you know. Wait, what? Where? Can I pet it? Yeah, of course. But actually, I had a dog. He died, and that's why What? his soul haunts in my car, and that's why you will hear him a lot. But a soul won't want to harm you or me, right? Yeah, the soul doesn't harm anyone, but yeah, I mean, like, you cannot pet him, but yeah, you can just feel His as you're presence. feeling right now. Yeah, his Hmm. presence, yeah. हम लोग अभी किधर जा रहे हैं? हम लोग डोडो करने जा रहे थे. जरा डोडो करोगे तुम? यार तुम्हारे लिए अच्छा है वैसे. अभी डोडो करोगे, तुम्हारे को पैसा मिलेगा. हाँ थोड़ा राइट लो. यार यहाँ तो कोई है ही नहीं यार. वापस ले लो. अरे यार कर जाता है यार कुछ. बेटा स्कैम ट्वीट करती है. अभी फिर से मार्क पे जाना है? फिर से मार्क पे जाना है क्या? Yes. Oh, by the way, can I? You should get my number. You can call me anytime you want. I Maybe can help you with I like how some you were stuff. going to say, "Can I get your number too? You can have my number." अच्छा लगा. I change my words. What is it, Shinoy? What? It's Shanoy Froster. Yeah, I dropped your text with my number. I get it. वैसे हम करने क्या गए थे? एक सामान लेने गए थे बस. तो ये टेस्ट कैसा था? और सोचा तुमसे थोड़ा गुफ्तगू कर लेते, तुम्हारे बारे में जान लेंगे. अब पहचान लिया हमने सही तुम्हें, है. कैसे लौंडे हो. पार्क किधर करोगे कि तुम्हारा पार्किंग स्पॉट तो रिपेयर हो रहा है? यहीं पे. एक सेकंड. नो, you don't get off. I'll just park. हाँ मतलब यहाँ पे साइड में पार्क कर दो बस बराबर.
कोई बिल आया हुआ एक्सेप्ट करियो। अबे करना 2000 का तो है, रो क्यों रहा है? दे दूंगा ना, बोल तो रहा हूँ। ये ले, अभी दे देता हूँ, ये ले। क्या बट ग्रिप दे चल। हाँ चल ठीक है, देना तू, करना एक्सेप्ट। कितने बिल भेजे? एक ही भेजा, एक Hello? ही एक्सेप्ट करियो Hello? बस। Who's this? Who am I talking to? I got your number from Twitter. You got my number from Twitter? Yeah. What? Yeah, someone just posted your number. God, what a jackass! कैसा इंसान है I भाई? thought it. What's your name, by the way? Are you warrior? No, my name is Chris, man. What about you? It's a very weird way to actually meet someone, but okay. I have to tell this warrior something. उसने मेरा number tweet पता नहीं क्यों किया है, but ठीक है, all right. Okay, myself Daniel Moreno, by the way. Daniel Moreno, nice to meet you, man. I'll see you around. I just Nice to meet you too by accident. Yeah. Okay. What the fuck? Okay, bye. चलो आओ क्रिस वैन। यार उसको देख देख तो लेते हैं, हमारी गाड़ी डैमेज है कि रिपेयर्ड है कि क्या सीन है। कल ज़्यादा दिक्कत हो गई थी गाड़ी में यार, मेरी ही गाड़ी डैमेज है इतनी ज़्यादा। ओ माय फकिंग गॉड, वापस से क्लॉकिंग करना पड़ेगा। सर मैं वापस ऑन ड्यूटी जा रहा हूँ, मेरा अपनी गाड़ी रिपेयर करनी। बताइए सर, बताइए। यस सर। फाइनली गाड़ी तो अभी अच्छी लग रही है। कौन सी? तेरी। सुबह थोड़ा सा टूटी हुई लग रही थी। अब कैसी लग रही है? अब सेक्सी लग रही है। मैंने अभी यहाँ पे इंटरव्यू दिया है। दे दिया अभी थोड़ा डर लग रहा है। उन्होंने बोला कि 24 to 48 आवर्स में आई विल नो इफ आई एम सिलेक्टेड और नॉट। क्या आगे वाला ही बदलवा लिया क्या जोनी? हो जाएगा। हैं? सर मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी कुछ लोग बचपन से ही हगास है। सर मैं ये बोल रहा था कि सर हाँ, एक मिनट को गाड़ी हाँ। उसके में वो वाला सीन नहीं था? क्या बोलते, एक हफ्ता हमारे लिए मतलब मटेरियल लाओ फिर देखो मिलेगा ऐसा। उसने बोला कि वो 3 राउट्स है। एक है पूरा स्ट्रिक्ट इंटरव्यू वेयर वन रॉन्ग आंसर विल लाइक जॉब नहीं मिलेगा, मना कर दे। दूसरा ऑप्शन है लॉजिस्टिक्स राउट जो उससे मटेरियल देना पड़ेगा, हाईएस्ट मटेरियल मिलता है। एंड तीसरा राउट है शायद से 1 या 1.5 हफ्ते बाद ओपन इंटरव्यूज हो रहे हैं फॉर एवरीवन। तो मैंने उसको पूछा कि अगर मैं स्ट्रिक्ट इंटरव्यू दूंगा एंड अगर वो फेल किया कैन आई गेट मटेरियल राउट डन? उसने कहा हाँ। सो ओके आई विल डू द स्ट्रिक्ट इंटरव्यू, इफ आई पास वेल एंड गुड, इफ आई डोंट आई विल डू मटेरियल्स। बढ़िया, सही है। मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड पे चल रहे हो पूरे। आई मीन इसने मुझे जगह दिखाई है, जगह का वाइब इतना क्लासी है कि लाइक मुझे यहाँ पे ही काम करना है। तो कोई तो 3 रास्ते हैं, एक रास्ते से नहीं हुआ दूसरा रास्ता करूँगा, दूसरे से नहीं हुआ तो तीसरा करूँगा। बढ़िया। सो गाइस जैसे कि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, आज हम लोग यहाँ ट्यूनर शॉप पे खड़े हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वागोस के बॉयज खड़े हैं हमारे साथ में, येलो कलर का मास्क पहन के, जो कि उन पे बिल्कुल भी जच नहीं रहा है। वो शनो फ्रॉश और क्रिस वेन पे जचेगा। तो क्या कहना चाहोगे तुम क्रिस वेन, कैसा लगा है? वागोस वो क्या है? अरे मतलब वो मास्क की बात करता है, येलो मास्क अच्छा लग रहा था ना। अच्छा हाँ यार अभी यार तुम्हारे लिए चीजें न्यू है, टेंशन मत लो, तुम सब सीख जाओगे थोड़े दिनों में।
थोड़े दिनों में तुम ही हो गया। ओए कैसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है। चल रहा है ओए। और ये थोड़े ना ट्वीट्स को भी इग्नोर मारना, जैसे कि ये ट्वीट कर दिया ना बीबीएमसी, क्या ये मजाक समझ रखा है क्या ये, व्हाट इज दिस बिहेवियर। गुड्डी कुमारी जी से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं वो तो ऑलरेडी वियर्ड ट्वीट्स दिखे मुझे, मैंने बस इग्नोर किया। ये क्या था भाई, सबके नंबर डाली जा रही है भाई। you should ignore। देख रहे हो यार, मैंने तुम्हें जैसे कि बताया था कि मेरे गाड़ी में एक वो है यार, सोल है यार मेरे कुत्ते की, यू नो। क्या है गाड़ी में? मेरी गाड़ी में सोल है ना मेरे कुत्ते की। अच्छा। या ही डाइड इनसाइड माय कार। एक ऑफिसर ने शूट किया था, उसमें मर गया था बेचारा। What? An officer shot a dog? या मैं ऑफिसर गली छोटे भाई, छोटे। ओए सांप है तीनों शॉप में सांप आ गया सर। सांप आ गया क्रिस्टियन की बैग में सांप लग रहा है मेरे को। बैग उतारो क्रिस्टियन। मेरा बैग तो खाली है बेटा, पक्की बात है तुम्हारे बैग में सांप आ गया। रैटल स्नेक भागो। मैंने दरवाजा बंद करो। सच में क्या बोल रही है? अब क्या? मेरे पास बस एक सांप है भाई। एम्प्लॉय भाई साइड में छोटा डोर भी है, वहां से जा सकते हो आप। नहीं देखो, मेरे पास बस एक सांप है एंड वो रैटल करता है जब मैं बताऊंगा उसको रैटल करने का। अबे सांप है भाई, सांप है उसके बैग में। हाँ तो किसी के पास वेट फॉर रियल, किसी के पास केला होता है। I mean, हमारे बैग में क्या है वो तो मैं ही जानता हूँ। और किसी के पास कुछ नहीं होता, जैसे कि एक्सेल। अच्छा कम बैक लास्ट में तूने नाम मेरा लिया लेकिन दास्ता अपनी बया कर। नाइस जोक ब्रो, नाइस जोक। यार वैसे मैं और एक्सेल किंग जब भी ऑन ड्यूटी रहेंगे ना, हम लोग ऐसी हरकतें करते रहेंगे। और ये जो हमारे जो साथ में बैठे हैं, मतलब साथ में खड़े होकर देख रहे हैं क्रिस्टियन, ये भी कुछ ऐसे ही सीख जाएंगे थोड़े दिनों में। ये भी हा ही यू में लग जाएंगे। क्या कहते हो भाई, सच्चाई है ना ये? मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस दूं। कैसे दो? किसी से भी ट्रेनिंग ले लेना। पर अपने पापा से ही लेना और सेक्सा से मत लेना। इससे और सेक्सा हाँ। कौन है? ऐसा सिखाया है कि बेटा जितने मैंने आज तक सिखाया है ना, एक भी बंदा छोड़ के नहीं गया मेरे से सीखना पड़ा है। और तुम्हें तो दिख ही रहा है कि यहाँ से सीखे तो तुम्हें नहीं, या तो पैर फ्लोट होने से पहले ही डूब जाएगी। देखिए बात ऐसी है, जितना तुमने काम नहीं किया होगा ना एक्सेल की, उतना मैंने काम करके छोड़ दिया है ट्यून शॉप में। ठीक है ना? क्या बात है? ये चालू होगी, ये काली अरे सर तो यहीं बैठे हुए थे, मैंने भूल गया था। ट्रेनिंग चालू होगी कि देखो ऐसे इंजन रिपेयर करते हैं और जैसी लड़की की आवाज आई, क्रिस 2 मिनट रुकना अभी आता हूँ। हाँ एक सेकंड, उसको कुछ उसको कुछ सामान उठाना था, तो वो बोला कि चलो गाड़ी चला ले। मैं चले गए, हम लोग कहीं गए, यहाँ पे एक समुद्र था उधर आसपास, उधर गए थे। ठीक है, सामान उठा लिया। फिर एक ट्वीट आया कोई जैस्मिन लड़की का, बोला कि वो डोडो पे है। शिना ने मुझे बोला कि एक और काम है सर, यहाँ पे भी चल ले। हम उधर गए, उसने कहा अरे यार वो छोड़ यार, वो काम नहीं करना है, यूटर्न लेके वापस शिना लगे। क्योंकि तो जैस्मिन देखी नहीं, तो मैं समझ गया, मैं समझ गया। जेसिका होगी वो। जेसिका था? जेसिका टेलर कौन है भाई? गुस्ताव जरा बताइए। जेसिका मेरे को नहीं हाँ मालूम, जेसिका एक बार मिला था। क्या था? नहीं मालूम, जो मैं देख लेता हूँ। कार्ड क्या था? वर्ड्स गुड। ए वजह नंबर भी है, मैं फोन कर लेता हूं। ये नहीं रखो छोड़ भाई, मेरे पास 2 है, मेरे पास 2 है। इट्स फाइन। हेलो मिस जेसिका टेलर से बात हो रही है? अरे भाई ट्रेडिंग कार्ड, ये तो भाई फेवरेट है। हेलो स्कैम यू। ओ भाई हेलो स्कैमर, हाउ आर यू? स्कैमर हो आप। आपने मेरे को जो स्कैम किया है ग्लॉक के लिए, वो मैं जिंदगी भर याद रखेगा, टेंशन मत लो। चलो अच्छा लगा तुम्हें कॉल करके, हम तो देख रहे थे जेसिका है लड़की कौन, तुम हो स्कैमर। ठीक है, चला गया। चलो भाई, नहीं इस लड़की से तो कभी मिलना नहीं चाहूंगा मैं आज के बाद। ये आवाज ऐसी क्यों नहीं कर रहा है सांप जैसी? सांप उसमें चला गया शायद। को दिखाया था, उनका नाम है माइकल वेस्पुची, एक्सेल जोन्स, और अब तीसरे तुम हो गए।
What? अरे दोस्त है मेरे, दो दोस्त है मेरे, तीसरा तुम हो गए ना देखने वाले, मेरा घर देखने वाले। सब मैं ज्यादा लोगों को दिखाता नहीं हूँ, सिर्फ लड़कियों को ही दिखाता हूँ, बट तुम अच्छे दोस्त लग रहे हो तो तुम्हें दिखा देते हैं। What the fuck is wrong with you, man? Bro, I'm Gucci, you know, I'm Gucci. Just give me 1 minute. I gotta think something really quickly, okay? Yeah. Oh, what the fuck? I parked my car inside. Where did it went away? What? What? हाँ बोलो बोलो। TT check. What? Work receipt check. AK-47 check. What? Nothing. I'm just checking, you know, some of my stuffs. वैसे I might go to bed right now, okay? I'll be back in like 2 hours. Okay. So you wanna place to crash in? You can. No. Can't be so frank, man. What? Like, can you drop me to apartments if that's alright? Oh yeah, sure. I can. Have a seat in my beautiful car. बराबर. Just letting you know, it's, you know, one of the best car in the city. It's called Outlaw. It can pass any challenges you want. You wanna see some challenges? Actually वो बाद में दिखा दे थोड़ा, because right now I have to. You are in urgent sleep. Yeah, not urgent, but यार कुछ काम है, you know. ऐसा पता लग जाएगा तुम्हें? अच्छा ठीक है। Bye bro, bye. Have a good day. Take care. Alright, see you around. Thanks, man. माइकल आए तो उसको बोलना, मतलब Who the fuck is Michael?
हेलो मिस्टर माइकल, क्या बड़ा से बात हो रही है? Guys, I'll just beat it back, okay? हेलो मिस्टर माइकल वेस्पुची। हेलो मिस्टर माइकल वेस्पुची। Mr. Michael Vespucci, have a seat in the car. Come on, bro. कुछ चूते कभी नहीं सुधरेंगे। मिस्टर माइकल वेस्पुची, बात जैसी है, मैं ना इधर ही घूम रहा था, मैंने आपको देखा अपार्टमेंट से निकलते हुए, तो मैंने सोचा कॉल कर लेता हूँ। ओ भाई, ओ बाप कोई ना छेड़क है के बात नहीं ठुका नहीं ठुका तो नहीं, अभी ठोक दूंगा अगली बारी। बट साला बाप की सड़क समझते हैं अपनी। अरे वैसे उसका बाप तो मैं हूँ, मेरी सड़क तो है नहीं, बट ठीक है कोई नहीं। हाँ तो माइकल वेस्पुची, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ पे काम पे कर रहा है आजकल? वाला भी वो तुम्हारे बेटे ने मेरा बेटा काम कर रहा है। आओ मैं तुम्हारा बेटे से मिलवा देता हूँ। अभी तुम बोलना कि तुम क्रिस में हो, ठीक है? चुप रहना। क्या बोलूं रुक क्या बोलूं तुम? माइकल तुम्हें ना रोल प्ले करना है, तुम्हें ऐसा करना है कि तुम एक बंदे हो क्रिस वेन, ठीक है? नहीं वो नहीं मस्ती करता हूँ। Hello Ayumi, you look so good today. How are you? Thank you. I'm good. You're looking beautiful as you are. शिनॉय कभी नहीं सोचेगा। हेलो वॉरियर, मेरे बेटे, मिलो अपने पापा से। बेटी बोलो मिलो अपने पापा से। वॉरियर I'm fucking out of here. Bye man, adios. It was a great place. बोलो मालिनीज man. इधर है। ओए कपड़े कहाँ हैं तेरे? ओए कैसे बोल रहे तू पहली बार? कपड़े वही तो मैं बोल रही हूँ कि कपड़े चाहिए। जाके कपड़े चेंज करके अभी किसी एक को लेके जाओ, वो बोल देगा। बेटा देख वॉरियर, एक बार बता रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ ना, मैं भी कपड़े चेंज करके काम करता हूँ। मुझे कैसे मालूम? चलो देखना पड़ेगा वो तो। मैं बता रहा हूँ तेरे को, मैं करता हूँ यहाँ पे काम जब, तो मैं कपड़े चेंज करके ही करता हूँ। हाँ तो जाना पड़ेगा मेरे को बात। हाँ तो जाके आप ये कहाँ से आ गया? ऐसे काम मत करो। मैं कहाँ से आ गया? जब से तो पहला नहीं था तब से मैं भोसड़ी के काम नहीं करना है। रॉबर्ट अरे माइनस हो जाएगा ना भाई। ये क्यों मैं डाउन कर रहा है? वॉरियर पागल हो गया भाई। बिजनेस अरे भाई मास्क उतार, बाहर आओ। मास्क में बिल्कुल काम नहीं करना। इसको कायदे कानून क्यों नहीं सिखाया माइकल तुमने? मैं क्यों सिखाऊं? ओ एडिकेट्स के टोपे, डंडे के चोपे, शांत बैठ। ये क्या होता है? हाँ बोलो बे, वो कहाँ से टपक गए तू? वही मैं कहाँ से टपक गया मैं? जब से तो पैदा नहीं था तब से मैं हूँ यहाँ पे। तमीज से बोल वॉरियर। पापा है तुम्हारे। एक सेकंड, कितने साल का है तू? मेरा नहीं है, तेरा दूसरा बाप है। कितने साल का है तू वॉरियर? Hey, what up guys? आओ रश आओ। वही you're not as old as me. I'm 29, born and brought up in Los Angeles वॉरियर। तो तू बोल ही नहीं सकता कुछ भी, तो गाल मार रहा है। कौन सी भाषा बोला ये? इंग्लिश। अरे इंग्लिश हिंदी छोड़ी, कुछ तगड़ी बन गई है तो खिचड़ी पक गई है जी। तगड़ी खिचड़ी पक गई है तो ठीक। खिचड़ी तो वो पकाती यार, घी डाल के एकदम। तेरी खिचड़ी पकाती थी बहुत ज्यादा। फिर मुझे वो बंदे से मिला। किसी पे जॉइंट जो मैंने देखो कल बोला था, मुझे एक बंदे से मिलना है। इतनी जल्दी क्यों है भाई साहब? तुम सांस लेके बोल दो यार। मैं भूल गया। मैं तो नॉर्मली ही बोल रहा हूँ। मेरे को जरा मैसेज करेगा। किससे मिलना है तेरे को? माइक हंट। ओह यस, माइक हंट तो पुलिस हो गए थे ना? माइक हंट से मिलना है तुमको? यप।
चोसन नहीं है, पागल है क्या तू? बराबर। एचओए में था वो। जॉइंट नहीं, जॉइंट नहीं है। जॉइन नहीं है, यार ब्राउन नहीं है। तू जॉइंट कैसे पीते? तुम करते क्या होगा? क्या जॉइंट नहीं है? क्या है तेरे पास? ब्राउन। चलो ब्राउन। ए करामत कैसे निकाल रहा है? हमारे पास भी है। खराब कर रहा है तू। तू यहाँ पे काम करता है, एम्प्लॉय है, मैं नहीं हूँ। अरे यार माफ कर, बाहर आओ, बाहर आके बात करते, बाहर आओ। हाँ स्कैमर थी। लूट 2000 लेके गया था, ये वही लग रहे हैं। री कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना? आई थिंक पता चलो ना। 2000 लेके गया। तो मैं बोला था रॉबर्ट। वैसे माइकल मेरे को अच्छे से जानता है। मैम आइए, आपको एक बंदे से मिला। डायरेक्ट हो गया। ये लड़की एक बात बोलेगी, तू खुद बता कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ अभी जिंदगी में। मैडम जरा इनको बताओ क्या हुआ था। रेडी हो जाओ। इन्होंने मैंने इनको क्लॉक बेची थी, ठीक है, 7000 उन्होंने नहीं 15000 बोले थे, मुझे 5000 दिए बस। फिर कहते मैं 7 दूंगा, 2 जरूर इन्होंने भाग गए और मेरा फोन भी नहीं उठाया उसके बाद से। पता है आपको ये शिनोय ने किया? माइकल क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल सच्ची कहानी है। इस बार के तो वही करता है। कैंसिल करूंगा तो जीए नहीं जाएगा ना? जीए नहीं जाएगा। उसकी बात कहता है कौन शिनोय, आप किसको फोन कर रहे हो? ये तो और आज मुझे डोडो के लिए कॉल करा था, बताओ। आज वो तुम्हें डोडो के लिए ना, और मुझे स्कैमर बोल। आज शिनोय तुम्हें डोडो के लिए कॉल करा था? हाँ नहीं, मैं इसने ट्विटर पे मेरे ट्वीट का रिप्लाई किया था, कम एट डोडो। अच्छा, शिनोय ने तुमको डोडो पे बुलाया? ये कमी नहीं यही मिलेगा। मैडम आप ना ज्यादा बोल रही हो, ऐसे बात है। तो मुझे दो ना। 3 2 1 गोइंग फॉर तक। तमीज ही नहीं है शिनोय। क्या नाम बताया मैडम आपने अपना? सुना, अनकफ कर ले यार। जेसिका जरा आपको जरूर थोड़ा सा गीला कर देते हैं हम। हैं? तो मैं आपको आज जैसे कि हम गीला करने वाले, तो आपको कैसा लग रहा है पहले ये बताइए, गीला होने से पहले। देखिए मैडम, आप ये अफवाहें फैलानी बंद करिए, नहीं तो आपको हम बता रहे हैं, अभी बहुत प्यार से बता रहे हैं, बहुत प्यार से बताया जा रहा है, बहुत प्यार से बताया जा रहा है मैम, ठीक है? पक्की बात है। दो 2000 की बात हुई, 2000 तुम्हारे को वेनमो कर दिए। चलो मौज मार। $1 कम है। $1 इसलिए कम है क्योंकि वेनमो में इतने की है। 3000 की लिमिट होती है। कितने बोला था? मैम एक्चुअली मेरी लिमिट कंप्लीट हो गई है ना, इसलिए तो निकलवाए। आपका $1 भी मिल गया आपको। गाइस, वैसे 5000 ले लेते स्मॉल हेल्प। बताओ। Like starting NGO. So where if you want to give around 50k, so I can run my NGO in a better way. Like yes, start. मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हैं एग्जैक्टली $17,500। तो अगर आपको 50,000 मिले तो उसमें से 25,000 मुझे दे देते तो अच्छा लगता। You can give 5k, like you know. ना मैंने हम लोग भी। मुझे फिर मैं गरीब हूँ, मुझे कोई खाना खिला देगा, मैं शांति से चली जाऊंगी। बताओ, भाग्य एनजीओ में खाना तो खिलाना चाहिए ना गरीब बंदों को। काय का एनजीओ हम जैसे को खाना नहीं खिला रहा। नहीं यार, खुद को गरीब क्यों बुला रहे हो? सारे स्कैमर हैं। खुद को गरीब क्यों बुला रहे हो? स्कैमिंग का काम शुरू करते हो। गुंडी हूँ ना शहर की, आने वाले टाइम की सबसे अमीर बंदी होंगी मैं। वैसे मुझे लगता नहीं आप किसी को स्कैम कर पाओगे। अबे देखो, अभी तुम निकाले ना 9 से 2000, अभी देखो सबसे निकलवाऊंगी फिर से। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता ना, वो कहानी चलते जाते हो, 2000 कभी नहीं मिलते तुम्हें। अरे वो तो तुम्हें भी पता है। हाँ। सबसे पहला स्कैम शिनोय के साथ कर लो, फिर मैं मान जाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम वही करते हैं लोगों के साथ। पहले मुझे 1500 डिपॉजिट करना तो कैश पड़ा। क्या कर रहा तू अभी? मैं कुछ काम से आया हूँ यार, शायद से कुछ बंदे से मिलना है मुझे, कुछ काम है। बताऊंगा। मुझसे छुपाएगा? हाँ, क्या पता तू जाके ब्लैक माफिया का बता दे। क्या? हाँ। अबे ओ
क्या? कब का सीन है वो, मैंने छोड़ दिया। अच्छा तुमने महीने छोड़ हो दिया? चुके, महीने। हाँ। अच्छा, और फिर अब किधर जा रहा है? अब कहीं भी नहीं जा रहा। अच्छा बस अच्छा, पर्पल देख टू रहा हूँ। ब्लैक टू देख रहा हूँ, सोचा था। क्या? कुछ नहीं यार, सम थिंग्स नेवर चेंज। हाँ कम से कम बताओ बताओ, आगे बढ़ो। कम बैक दो, कम बैक दो। कुछ नहीं। हाँ दो कम बैक, दो कम बैक। नहीं नहीं कुछ नहीं। वही अभी है। तो फिलहाल सुखी की जिंदगी जी रहे हैं। सुखी की